Welcome to VLearn. This is session number 3 of Linux administration. In this session, we'll discuss about how to install software on Linux systems, especially using yum repository or using RPM packages or using source codes. We'll also discuss that how we can remove the software. So let's begin with how to install the software. So come back to your Linux system. Log in with user root. Now, just try to understand what is yum repository. यम रिपोजिटरी क्या होती है? कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कि सर्वर में आपने सारे पैकेजेस रखे हुए हैं, ठीक है, और उन पैकेजेस की पाथ आप यम सर्वर को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है. लेट्स फाइंड आउट वेयर द थिंग्स आर लोकेटेड. गो टू /etc फोल्डर. etc फोल्डर के अंदर जाने के बाद गो टू यम just first ls here, pipeline grep yum, here cd yum dot repos dot d. Okay, in this you will find that there are some repositories. repositories क्या हैं एक बार ओपन करके देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. so just write here vi or vim, whatever you prefer. I have opened the first repository and you can find here that in this base there is the name of the context. Okay, context का नाम का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे पहली चीज़ ये बताते हैं कि ये किस पर्टिकुलर पर्पज़ से आपने रखी है. फॉर एग्ज़ाम्पल बेस इंस्टॉलेशन, अपडेट्स, और किसी खास सॉफ्टवेयर के लिए रखा तो सॉफ्टवेयर का नाम मेंशन कर दिया दैट दिस इज़ फॉर गूगल क्रोम और दिस इज़ फॉर से स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक VLC मीडिया प्लेयर और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो यू कैन डिफाइन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली ऑल्सो. देन आप डिफाइन करते हैं रेपोजिटरी का नाम. रेपोजिटरी के नाम से क्या मतलब है? हियर वी डिफाइन दैट यूजिंग व्हाट नेम इट विल डिस्प्ले अस कि ये क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है. जैसे CentOS रिलीज सर्वर देन बेस डिफाइन किया गया है. सो इसमें क्या होगा कि जब आप कोई भी पैकेज फाइंड आउट करेंगे वो अगर इस रिपोजिटरी के अंदर होगा तो ये आपको इन्फॉर्म करेगा दैट द लोकेशन ऑफ द कंटेंट इज़ in CentOS whatever your server release, that means say 5.2 6.2 whatever, then इसके बाद बेस सर्वर. सो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है आप रिपोजिटरीज फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है. देन आफ्टर गेटिंग द रिपोजिटरीज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक फॉर द अपडेट्स ऑल्सो. सो GPG चेक अगर इसके ऊपर परफॉर्म हो सकता है 1, नहीं हो सकता है 0, ठीक है. देन फाइल्स कहाँ पे आपको मिलने वाली हैं, ठीक है. जो भी रेस्पेक्टिव फाइल्स हैं GPG की वो आपको कहाँ स्टोर करनी है, दैट प्लेस यू डिफाइन. देखिए इसमें ये पार्ट एसेंशियल नहीं होता. रेपोजिटरी का नेम और मिरर लिस्ट ये 2 पार्ट एसेंशियल होते हैं, ठीक है. देयर इज़ वन मोर पार्ट दैट इज़ बेस URL. बेस URL आप नॉर्मली तब देते हैं जब आप ये डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है ये इतना पार्ट तो आएगा ही URL के अंदर, ठीक है. एंड देन आफ्टर उसके बाद आपका हो सकता है कि स्पेसिफिक पैकेज का नाम आता हो, कुछ डायरेक्टरीज़ के बाद आता हो, ठीक है. मीन्स अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि नहीं हमको तो इसी सर्वर से कोई चीज़ रीड करनी है, एट दैट टाइम you just restrict it using base URL. Here you can find so many contexts are available
like that was the first base context. Then there is update context. Update context is all about software updates. Then there is another extras. Extras is something which is not the part of operating system, but you can have this using this particular repository. And there is one CentOS Plus. Okay. इन सभी पेजेस को ओपन करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए. So you have to make sure before using YAM server that you are connected to internet or not. So how you will check? Just write here ping, then any website name like google.com. If it says unknown host, that means your DNS server is not configured. So go to setup and check for the status of DNS server. Yeah, it is not configured. If you are not the part of any domain, then you have to mention here hostname as localhost.local domain. Then you have to define your primary DNS. I am taking one DNS server, that is a public domain, public DNS server provided by Google is 8.8.8.8, and secondary DNS server is also of the same kind, 8.8.4.4. okay. DNS सर्वर के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि इट इज़ द पार्ट ऑफ योर नेटवर्क. इट मे बी आउटसाइड टूल ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. You have made changes in network service, so service network restart. Okay, it is not able to communicate with the DNS. Let's check about the constraints. So after checking your network settings, you can find out that what could be the problem. And now you can ping google.com or any website whatever you want. ये जब आप कंफर्म कर लें कि हाँ आप कोई वेबसाइट पिंग कर पा रहे हैं, then you can write here yum install and the name of package. Okay. If you want to see the list of packages available, yum list and then star. It will check all the repositories, all the repository servers, and it's not able to connect that mirror list. So just wait for a moment. So after checking your firewall settings, you will find that this yum server is connectable. Now yum list star, इससे जब yum server connectable होगा तो it will go to outside, and from outside network it will find the place where from it can go out. Okay, and then it will check all the repositories available on the server. वहाँ पे इसको जो भी पैकेजेस मिलेंगे उन पैकेजेस की आपको लिस्ट मिल जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है. बट इट टेक्स टाइम टू अपडेट. इट हैज़ चेक्ड फॉर बेस some specific website like ftp.chuhk.edu.hk. In the same way, it has found some other websites also. Now here you can find base context, then extras, updates, whatever the contexts we have mentioned. It is looking for all those contexts, and it is trying to find out the list of the packages.
and whatever the packages they have found, all the packages are installed, that's why it is not been listed. Okay, अगर पैकेजेस इसके अंदर जो पड़े हुए हैं वो इंस्टॉल्ड नहीं होते तो ये आपको डिफ़ाइन कर देते कि हाँ पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल्ड नहीं है, ये वाला पैकेज नहीं इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आई वांट टू सी GCC, so you can find the name of that specific package. Remember one more thing, that if you have initiated a yum server and you have initiated one yum command, जब तक वो कमांड कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको वेट करना होता है, या फिर आप उस पुरानी कमांड को किल कीजिए, उसके बाद दोबारा से yum server स्टार्ट कीजिए। ठीक है, so I just want to see all the packages that are available for GCC compiler. So here again it is trying to find out the internet connection, then it is going out, and from outside network it has found that gcc.i686 is the directory that is a kind of package. This is given by the base, and in the same way there is another file, it is in some another context. Okay, now suppose you want to install this particular thing, say GCC. So what you have to do, yum install and then GCC. It will look for the server, सर्वर में फाइंड आउट करेगा कि आप जो कंटेंट ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा कहाँ, उसके बाद चेक करेगा कि डिपेंडेंसीज़ क्या क्या हैं। यम सर्वर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इट विल ऑटोमेटिकली चेक दैट व्हाट आर द डिपेंडेंट थिंग्स यू रिक्वायर। और आपने तो केवल GCC कहा था, बट उस GCC के लिए ये सारी चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं। सो इन सभी चीज़ों को ये साथ में इंस्टॉल करना चाहेगा। ठीक है, इसने बताया 18 MB का डाउनलोड होगा, वेदर यू वांट टू डू और यू वांट टू क्विट। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं जस्ट प्रेस Y, अदरवाइज you can just press enter or you can press N, so it will stop. हमने Y प्रेस किया, now it has started downloading. You can find out that how much the content is downloaded and what content is currently downloading. Means अगर आप यम सर्वर के थ्रू कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारी डिपेंडेंसीज ऑटो रिजॉल्व होती हैं, और दूसरी बात कि आप अगर कोई चीज़ ऑनलाइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी डाउनलोडिंग के प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। आपको पता होता है कि हाँ कितना % टास्क एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है। आपको ये भी पता चलता रहता है कि येस व्हाट आर द नेक्स्ट प्रोसेसेस टू बी गोइंग टू बी कैरीड ऑन इन द सेम वे। यहाँ पे आपको दो जगह % दिख रहा है, दिस वन इज़ फॉर द करेंट फाइल एंड दिस वन इज़ फॉर ओवरऑल प्रोसेस, and you can find that it is working fastly. Here you can see the speed of your network also, like here in my network it is 200 kbps. ना अगर ऐसा कहीं हो रहा होगा कि आप किसी पर्टिकुलर एक टास्क के लिए एक पैकेज यूज़ कर रहे हो और उसकी जगह दूसरा पैकेज भी यूज़ हो सकता है, और जो आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो ये उस दूसरे वाले पैकेज पे डिपेंडेंट है, उस केस में आपको ये प्रॉम्प्ट भी करता है कि क्या इसको इंस्टॉल करूं, इसकी वजह से ये वाली चीज़ आपकी डिस्टर्ब होगी। मीन्स इफ़ देयर इज़ सम काइंड ऑफ सिस्टम डिस्टर्बेंस गोइंग टू हैपन विद द इंस्टॉलेशन, इट विल ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट्स यू। ठीक है, कुछ चीज़ों को अपडेट करना होगा तो अपडेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
Now it has defined you that what it has updated. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमको इंस्टॉलेशन करनी है यूजिंग yum server, then there is only way that you have to get connected with internet. No, it is not like that. आप अपने नेटवर्क के अंदर भी कोई एक ऐसा रेपोजिटरी सर्वर बना सकते हैं जिसके अंदर आप पैकेजेस स्टोर कर दें एंड वहाँ से आप अपने yum repositories को कॉल कर लें. We'll discuss this particular topic in later segments. Currently, let's move ahead onto installation by some offline medium. ये ऑनलाइन इंस्टॉलेशन था. ऑफलाइन इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या करते हैं, CD मीडिया यूज़ करते हैं. सो इंसर्ट CD मीडिया ऑन योर डिवाइस एंड देन जस्ट चेक दैट व्हाट इज़ द कंटेंट एंड ऑटोमेटिकली CD मीडिया आपकी जो है वो मीडिया फोल्डर के अंदर माउंट होती है. अगर सपोज़ नहीं होती है तो विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन फोर्सफुली माउंट इट एट सम स्पेसिफिक प्लेस. ओके, इसके अंदर जब आप मीडिया को चेक करेंगे तो इसमें पैकेजेस नाम से जो है एक फ़ोल्डर होता है, एक डायरेक्टरी होती है. जस्ट गो टू पैकेजेस डायरेक्टरी एंड यू कैन प्रेस LS to find out the list of all the content in this directory. Now there is one huge problem कि एक बार में बड़ी सी लिस्ट आई और चली गई. मुझे तो वो लिस्ट देखनी थी, उसमें से छांटना था कि ये वाला रखना है, ये वाला नहीं रखना. So if you want to see this list and you want to move up and down both directions, so you can use ls space pipeline symbol then less. Okay, suppose I have found that what I have to install. For example, I have selected here one tool that is used for command line internet access, and it is e-links. E-links is not available in this package list. You can find out any package of your choice. For example, the GCC compiler that we have installed, that was available in this CD also. Okay. You can find any program from here and you can test whether it is installed or not. So for example, I am taking here HTTPD service. Okay, so just to quit, press Q and write here RPM -IVH and whatever you want to install, HTTP D dash. So RPM name you have given, just press enter. It will give you that what are the dependencies, means it requires this and this package to be installed earlier, then after it can start. आपको डिपेंडेंसीज पता चली, चेक कीजिए कि क्या वो डिपेंडेंसी आपके पास अवेलेबल है. Write here ls pipeline grep and the sequence that you want to find. For example, I just want to see dval. It's a huge count. You can pipeline here and less. You can move up and down now. So here you can find ARP dval and ARP util, which was required by the package. So RPM -IVH APR
In the same way, rpm minus ivh apr if you don't remember the name of the package, you can again restart it. ये इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको खुद ही बताएगा what was the name. rpm minus ivh apr util. Now it needs 3-4 more packages. You can find out and install one by one, and you can go ahead. In YAML server, there is one good thing that it doesn't require this kind of activity from your side. It automatically installed whatever the repository is required. Now, third way of installation is called installation by source code, and we'll discuss this particular thing in next part of the session. That's all for this part of the session. Meet you next time. Thank you.